अगेन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम ले आए हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का और एक न्यू वीडियो पार्ट 8। पार्ट 1 to 7 ऑलरेडी हमारा चैनल में अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में आकर देख लीजिए और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड चलो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is not a characteristics of a professional nurse? Which of the following is not a characteristics of a professional nurse? Option A compassion, option B accountability, option C incompetence and option D इंटीग्रिटी। तो इसका आंसर बताने से पहले हम जानते हैं इन 4 ऑप्शन का मीनिंग क्या है। पहला है कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग है हेल्पफुल नेचर, सिंपैथी। देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग है जो पेशेंट का डाउट है उसका एक्सप्लेन करना, जो आंसर देना, इसका मतलब ये है। देन इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब है नॉट एबिलिटी, नो एबिलिटी, मतलब अनफिट, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्ट, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इनकॉम्पिटेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए नर्स इन ए healthcare setting? What is the primary role of a nurse in the healthcare setting? Option A diagnosing disease, option B prescribing medications, option C providing patient care and option D conducting surgeries. Which is the primary role? तो इसका आंसर है ऑप्शन C providing patient care is the primary role of a nurse. Then next question, question number 3, which of the following is an example of a non-verbal communications technique used by nurse? Which of the following is an example of a non-verbal communication technique used by nurse? Option A active listening, option B empathy, option C touch and option D open-ended questioning. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टच। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब द प्रैक्टिस विथ प्रूफ। देन ऑप्शन ए टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, ऑप्शन बी टू इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, ऑप्शन सी टू प्रमोट पर्सनल बिलीव्स and option D to disregard research finding. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an example of a nurse intervention? Which of the following is an example of a nurse intervention? इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप। देन ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, ऑप्शन बी डायग्नोसिंग डिजीज, ऑप्शन सी ऑर्डरिंग लैबोरेटरी टेस्ट एंड ऑप्शन डी कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6, what does the acronym ADVAI stand for in the nursing process? A D P I E। तो इसका फुल फॉर्म क्या है इन नर्सिंग प्रोसेस? ऑप्शन ए एक्सेस, डायग्नोस, प्लान, इम्प्लीमेंट, इवेलुएट, ऑप्शन बी एनालाइज, डॉक्यूमेंट, प्रेस्क्राइब, इंटरवेन, एजुकेट। देन ऑप्शन C access, document, plan, intervene, evaluate. Then option D analyze, diagnose,
प्लान, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सेस, डायग्नोस, प्लान, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर 7, which of the following is an example of a nosocomial infection? तो what is nosocomial infection? Let a patient under treatment of doctor at the surgery due to unhygienic या other region the infection occur by virus microorganism, so that is called nosocomial infection. When the patient is in hospital, that time the infection occurred. The option A, influenza contracted at home. Option B, pneumonia acquired in the community. Option C, surgical site infection acquired in the hospital. Then option D, urinary tract infection caused by पोर। देन इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन acquired in the hospital. Then next question, question number 8. What is the purpose of using personal protective equipment PPE in nursing practice? Option A, to enhance physical appearance. Option B, to prevent the spread of infections. Option C, to increase patient comfort. And option D, to reduce healthcare cost. What is the purpose of using personal protective equipment PPE? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is an example of a chronic illness? Option A, common cold. Option B, appendix. Option C, diabetes mellitus. And option D, acute bronchitis. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डायबिटीज मेलिटस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. What is the normal range for adult blood pressure? What is the normal range for adult blood pressure? Option A, 8/40 millimeter Hg. Option B, 120/80 millimeter Hg. Option C, 160/100 millimeter Hg. And option D, 200/120 millimeter Hg. तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना होगा, तो कमेंट में लिख दीजिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is an example of a non-modifiable risk factor for cardiovascular disease? Which of the following is an example of a non-modifiable risk factor for cardiovascular disease? Option A, smoking. Option B, sedentary lifestyle. Option C, obesity. Option D, फैमिली हिस्टोरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फैमिली हिस्टोरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. What is the purpose of using therapeutic communication techniques in nursing practice? Option A, to promote effective teamwork. Option B, to establish professional boundaries. Option C, to facilitate patient-centered care. And option D, to enforce strict rules and regulations. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट patient-centered care. Then next, which of the following is an example of a sterile technique used in nursing procedures? Option A, hand hygiene. Option B, wearing glove. Option C, using a clean dressing. Option D, administering oral medications. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, wearing gloves. Then next question, question number
14. What is the primary purpose of documenting patient care in nurse practice? What is the primary purpose of documenting patient care in nursing practice? Option A, to increase workload for nurses. Option B, to ensure accurate billing. Option C, to provide legal protection. And option D, to avoid communications with other. देन इसका आंसर है टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन द डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट केयर इन नर्सिंग प्रैक्टिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is an example of a symptom? Option A, fever. Option B, rash. Option C, elevated blood pressure. And option D, positive laboratory test result. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेवर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. What is the purpose of using the nursing process in clinical practice? Option A, to increase workload for nurses. Option B, to promote evidence-based practice. Option C, to discourage critical thinking. And option D, to reduce patient satisfaction. देन इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is an example of a central venous access device? Which of the following is an example of a central venous access device? Option A, intravenous catheter. Option B, nasogastric tube. Option C, urinary catheter. And option D, peripherally inserted central catheter, PICC. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, PICC. Then next, what is the primary role of a nurse in medication administration? What is the primary role of a nurse? Option A, prescribing medications. Option B, dispensing medications from the pharmacy. Option C, monitoring medication side effects. And option D, administering medication to patients. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, administering medication to patient. Then question number 19. Which of the following is an example of a nursing diagnosis? Which of the following is an example of a nursing diagnosis? Option A, hypertension. Option B, diabetes mellitus type 2. Option C, impaired mobility related to musculoskeletal injury. Option D, pneumonia caused by bacteria infection. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, impaired mobility related to musculoskeletal injury. Then next question number 20. What is the purpose of using therapeutic touch in nursing practice? Option A, to manipulate patients. Option B, to provide comfort and relaxation. Option C, to impose personal beliefs. And option D, to enforce strict rules and regulations. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड comfort and relaxation. Then next question number 21. Which of the following is an example of a non-opioid analgesic? Option A, morphine. Option B, acetaminophen. Option C, fentanyl. Option D, oxycodone. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, acetaminophen. Then question number 22. What is the primary role of a nurse in wound care management? What is the primary role of a nurse in wound care management? Option A,
diagnosing wounds. Option B, performing surgical procedures. Option C, administering antibiotic. And option D, assessing and dressing wounds. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, assessing and dressing wounds. Then next, question number 23. Which of the following is an example of a communicable disease? Which of the following is an example of a communicable disease? Option A, hypertension. Option B, diabetes mellitus type 2. Option C, influenza. And option D, osteoarthritis. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा. Then next question, question number 24. What is the purpose of using therapeutic positioning in nursing practice? Option A, to restrict patient movement. Option B, to promote patient independence. Option C, to maintain proper body alignment and prevent complications. Option D, to enforce strict rules and regulations. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, to maintain proper body alignment and prevent complication. So next question, question number 25. Which of the following is an example of a nursing sensitive outcome? Which of the following is an example of a nursing sensitive outcome? Option A, decreased pain intensity. Option B, increased blood pressure. Option C, improved laboratory test results. And option D, reduced health care costs. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड पेन इंटेंसिटी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. What is the primary role of a nurse in patient education? What is the primary role of a nurse in patient education? Option A, providing emotional support only. Option B, delivering information to patients and their families. Then option C, restricting access to healthcare resources. And option D, enforcing strict rules and regulations. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, delivering information to patients and their families. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is an example of a non-invasive nursing procedure? Option A, inserting a urinary catheter. Option B, administering intravenous medication. Option C, performing wound debridement. And option D, measuring blood pressure. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, measuring blood pressure. Then next question, question number 28. What is the purpose of using therapeutic hypothermia in nursing practice? Option A, to induce fever in patients. Option B, to promote patient comfort. Option C, to prevent infection. Option D, to reduce neurological damage after cardiac arrest. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, to reduce neurological damage after cardiac arrest. Then next question, question number 29. Which of the following is an example of a nursing theory? Option A, germ theory. Option B, cell theory. Option C, Maslow's hierarchy of needs. And option D, theory of relativity. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, Maslow's hierarchy of needs. Then question number 30, our last question. What is the primary role of a nurse in end of life care? What is the primary role of a nurse in end of life care? Option A, euthanizing patients. Option B, providing emotional support to families only. Option C, ensuring comfort and dignity for patients and their families. And option D, enforcing strict rules and regulations.
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ensuring comfort and dignity for patients and their families। तो ये रहा हमारा टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और हमें इस तरह ही सपोर्ट करते रहिए। तो और वीडियो और ऐसे और भी वीडियो हम लाएंगे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।